ये रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया से बाहर आके यहाँ पे सामने ही कैफ़े है डायरेक्ट। ओके, ये जो एरिया है ये पूरा कैफ़े का है। सामने है कॉमन रूम, यहाँ पे शायद बैठ के खाने के लिए है या टाइम पास जो भी रहेगा वो। यहाँ पे कॉमन रूम ये सब गेम्स वगैरह रखते हैं यहाँ पे। बाहर से दिखा देता हूँ। बीन बैग्स है, चेस है, अलग अलग गेम्स, पूल वहाँ तक है। ठीक है, कॉमन रूम क्लोज्ड। यहाँ पे है स्विमिंग पूल। चेंजिंग रूम, स्विमिंग पूल। यहाँ पे भी थोड़ा रिक्रिएशनल एरिया है। और यहाँ पे ओ गांजा गांजा नहीं करना है। ओके, और यहाँ पे है ये डॉर्म रूम्स है। ये जो है ये डॉर्म रूम्स है, लाइन से है, 5 लोग की कैपेसिटी है ऐसा बोलते हैं। मैं गया नहीं अभी तक इसमें। हम लोग ने लिया है प्राइवेट कॉटेज। जो ये लेफ्ट साइड में प्राइवेट कॉटेज है। कॉटेज दिखाता हूँ मैं। ओके, so let's start with the tour of the private cottage of the Zostel Collard. So this is the area. Kabat is there. This is the bed. This is the arts and these things. This is the AC. This is the washroom and the bathroom combined. And the compact living space. Okay, you can see from here. दिस इज़ द जस्टल कोलाड। ऐसा ही है डॉर्म रूम में भी, बट यहाँ पे 2 लोग का कैपेसिटी है, वहाँ पे 5 लोग का कैपेसिटी है। और डॉर्म रूम में डबल डेकर है। बहुत लोग ने यूट्यूब पे डाला ऑलरेडी, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत लोग को मालूम भी हो, डबल डेकर बेड्स रहता है वैसा वाला है। ठीक है, हॉस्टल से निकल गए हैं, जा रहे हैं दूसरे जगह पे।